Hello students, hello everyone. So student, this is a session which is discussing the importance of staying positive before the CAT exam. So we are starting in a couple of seconds. I hope you all are ready. I am Praveen Tyagi guys and I'm into the field of education for last 23 years and I take classes for CAT and I'm guiding students for so many years. Uh, I have a rich business experience also of 17 years. So, because of my experience, I would like to transfer the skills to you people through this session. And this session is about how to stay positive, and staying positive is of utmost importance for CAT. So, my colleague Parikshit ji is also there with me. So we will together try to guide you to the best of the level. So over to you, sir. Okay, hello everyone. I think now we are less than almost 100 hours right away from the CAT at this point of time. So good evening. My name is Parikshit. So I've been teaching for the last 7 years now, right? I teach Quants and LRDI on the Unacademy platform. As far as my qualifications go, I'm an engineer. I hold a FRM degree. I also am an FRM charter holder, a financial risk manager, and I'm now currently in my CFA level 3. So as far as exams go, I think I just love giving them, and probably I and Praveen sir today will be sharing a lot of tricks, because at this stage, right, less than 100 hours for your exam, it's very, very important that you stay calm, you stay composed, and you're almost near the finish line. So that final push is what you require at this point of time. Yes? Okay. I think we'll get started. Yeah, Praveen sir, you may take over from here. Yeah, sure. So you added a very valid point and a very terrifying point also. 100 hours to get. So any student will be terrified by listening to this 100 hours. Just few hours. But guys, don't lose confidence because of all this. देखो मैं ये मानता हूं कि आप पॉजिटिव रहना क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पॉजिटिव रहना समझना बहुत जरूरी है कि वो होता क्या है और नेगेटिविटी क्या काम करती है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो गाइस, जब आप कैट सेंटर पे जाओगे ना, तो आधे लोग तो ना भीड़ देख के घबरा जाते हैं, ओ भाई कितने सारे लोग पेपर देने आए हैं। राइट गाइस, तो वहां पे पहली जगह वहां पर कॉन्फिडेंस लूज होना स्टार्ट हो जाता है। फिर अगर लोगों की शक्लें देख लो, तो किसी को मोटा चश्मा लगा होता है, किसी के बाल खड़े होते हैं, किसी ने दाढ़ी नहीं बनाई होती है। देख के ऐसा लग रहा होता है कि पता नहीं कितनी पढ़ाई करी है सबने और मैंने पढ़ाई नहीं करी है। राइट। और जब एग्जाम में आप एग्जाम करते करते सर उठा के देखते हो, तो सब एग्जाम कर रहे होते हैं, आप ही देख रहे होते हो। सो गाइस, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कॉन्फिडेंस लेवल गिरा देती हैं गाइस। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो भी कॉन्फिडेंस गिर जाता है, क्वेश्चन दूसरा सॉल्व नहीं हुआ तो और गिर जाता है गाइस। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू स्टे पॉजिटिव। आप इन सभी सर्कमस्टांसेस में आपको क्या सोचना चाहिए, दैट इज व्हाट आई विल डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जब सेंटर पे एग्जाम देने के लिए भीड़ दिखाई दे, तो आपको क्या सोचना चाहिए कि 2.5 लाख लोग पेपर देते हैं तो थोड़े सही हैं, है ना। सो मतलब सोचने का तरीका बदलना होगा। रादर देन थिंकिंग कि कितनी भीड़ है, आप इसको उल्टा सोचिए, वी नो हाउ मेनी पीपल आर देयर, दीज आर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बट आई नो दैट द नंबर ऑफ कैट एस्पिरेंट्स। और गाइस, वो खाली कैट एस्पिरेंट्स की भीड़ नहीं होती है सेंटर के बाहर, उनके पेरेंट्स भी होते हैं, भाई बहन भी होते हैं, है ना, और गुड विशर्स भी होते हैं। तो वो भीड़ और लोगों की भी होती है, तो डरना नहीं है भीड़ से। जहां भी कैट का सेंटर होता है वहां आसपास ट्रैफिक जाम हो जाता है, नॉर्मली ऑब्जर्व किया गया है गाइस। सो दिस ऑल आर टेरिफाइंग थिंग्स, बट यू नीड टू थिंक इट फ्रॉम अ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू।
एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो सोचना क्या चाहिए, मगर ये नहीं हो रहा मेरे से तो ये मुश्किल क्वेश्चन होगा, और मेरे से नहीं हो रहा तो बाकियों से भी नहीं हो रहा होगा, है ना। मैं तो समझदार हूं, मैं छोड़ के आगे बढ़ गया, जो नहीं बढ़ा वो गया। तो आप उल्टा ये सोचिए कि द क्वेश्चन यू आर नॉट एबल टू डू, यू हैव स्किप्ड इट एंड इट इज अ ट्रैप फॉर मेनी ऑफ देम। सो ये पॉजिटिव सोचने का तरीका हुआ ना गाइस, हाउ टू थिंक पॉजिटिव इवन इन द नेगेटिव सिचुएशन। एंड गाइस, लोगों की शक्ल देखकर डर लगता है। सो गाइस, ऑल पीपल हु लुक वियर्ड आर नॉट द टॉप परफॉर्मर्स इन कैट, राइट। सो जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनकी अगर आप सबकी शक्लें देखोगे ना तो उनकी सबकी शक्ल में वियर्डनेस कॉमन नहीं होगा। राइट गाइस, सो प्लीज हर चीज को अलग तरीके से सोचिए, बहुत पॉजिटिव सोचिए कि मेरे को आज पेपर क्रैक करना है। हाँ, एक काम आप और कर सकते हैं गाइस पॉजिटिव रहने के लिए एग्जाम डे पर। आप एग्जाम से पहले कुछ मीठा स्वीट लड्डू खा सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, चॉकलेट ले सकते हैं, समथिंग दैट कैन गिव यू हाई एनर्जी फॉर दोज 2 आवर्स। नंबर 1। नंबर 2, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है गाइस। मैंने सुना है कि मीठा खाने से पॉजिटिविटी आती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और नेगेटिविटी जाती है। सो अनदर बेनिफिट। एंड देन गाइस, एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिविटी आएगी और एक और फीलिंग आएगी। मेरे को तो सर ने बता दिया था, मैं तो लड्डू खा रहा हूँ, सारे थोड़ी खा रहे हैं लड्डू। तो मेरी परफॉर्मेंस बेटर होने वाली है। सो गाइस, दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन फील इन द एग्जाम डे टू मेक योर सेल्फ पॉजिटिव। और उससे पहले 100 डेज का 100 आवर्स का जो टाइम रह गया है ये, तो 100 आवर्स में पॉजिटिव कैसे रहना है गाइस। पहला चीज, नेगेटिव ख्यालों को मन में आने मत दो। अगर कोई भी डाउट लगता है रिगार्डिंग योर करियर और एनीथिंग एल्स, गाइस मैंने स्पेशल क्लासेस ली हैं बहुत सारी। अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, आप मेरी स्पेशल क्लासेस देख सकते हो। डेली मैं मोटिवेशन क्लास ले रहा हूँ, डेली 10 AM आई टेक 1 मोटिवेशन क्लास, एट 7:30 PM ऑल्सो आई टेक अ क्लास। सो मैं डेली मोटिवेशन क्लासेस ले रहा हूँ। कोई भी डिमोटिवेशन लगता है क्लास में आ जाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, राइट गाइस। सो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग फॉर माय स्टूडेंट्स। So you can also take the benefit, and this class is free for everyone. You just need to download the Unacademy app and you can start learning. That is how it starts. So guys, एग्जाम से पहले ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 2-3 घंटे अपने को पढ़ना है, रिवाइज करना है हल्का हल्का, और कम भी नहीं पढ़ना है। कम नहीं पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस चला जाएगा, ज़्यादा पढ़ोगे तो प्रेशर में आ जाओगे। सो यू हैव टू स्टे इन अ बैलेंस स्टेट। एंड इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो कोई गेम खेलो, बैडमिंटन खेलो, स्क्वॉश खेलो, कोई भी गेम जो आपके लिए पॉसिबल है। कुछ नहीं होता ना, बास्केटबॉल खेल लो। एक जगह खड़े खड़े खेल सकते हो, राइट गाइस। बट ये सारे गेम्स खेलने से you will have a different sort of energy in your body, and this will bring positive energy in your body and take away negative energy from your body. So you can do things like this, many other things I can talk, but थोड़ा सा अभी सर बताएंगे, फिर थोड़ा सा मैं बताऊंगा, right guys? So one by one we will talk. So over to you, sir. Yeah. So again, as I say, right, today at this point of time, if you're seeing this video, right, somewhere you feel that a bit of motivation is required, and that is why you are looking at this video. Now, first things first, okay? Sir talked about the crowd management, right? He talked about the crowd that you'll see on your exam day. I would say the good part of it. One reason why you at this stage could be a bit less motivated is because your mock scores were not very good, right? Now, whenever you have enrolled for a mock series, it must be one of the top, providers, mock providers, be it Unacademy or any other provider. Now, what you realize or what you need to realize is a 50,000 or 60,000, whatever the crowd, right? There's only a serious population. The serious population is enrolled for the CAT mocks. Now, whenever you wrote a mock in the last 1 or 2 months, you have actually competed with the best in the crowd. But you know, on the exam day, on the 29th, every A, B, C, and X, Y, Z will come and give the exam. Now, you should actually feel happy about it, because you know what? Because these are people who have not enrolled for any mock, and they are only coming and increasing the crowd strength. And you should feel happy for it,
for the simple reason that these are people who will rank below you most probably, because their preparation is not as smart and they have not done as much hard work as you. So what happens is, whatever was your mock score, many a times research has proved time and again that your actual percentile will be higher, okay, will be higher, because a crowd will come and actually enter the CAT race. But you know what? This crowd has not prepared well for the exam, right? So you should feel happy that 240,000 students are actually writing the CAT. That's point number one. Point number two, this Sunday is your CAT, and I see a few comments, and I've also been telling you in my sessions, something, no mocks, right? If at this point you are saying that, should I write a mock again? I would say probably not. I think whatever you have done in the last 2 months, 3 months, or 4 months, or some of you over a period of 1 year, right? It's more than enough. Remember, you must have written a mock in the month of September or probably in the month of July, which you do not even remember at this stage. I would say go back and rather revise a mock. If you actually want to do something, talk about a mock paper, go and revise that mock. I'm sure a mock in the month of July, in the month of September, there was a mock, there were a lot of questions which you could not attempt. It is at this stage better to go back and revise those questions rather than doing something completely new. And especially if you have left out a chapter, I think 3 days, 4 days, you have decided to leave it, right? That was your choice. And I think at this point of time, you do not start anything new, right? Because at this point of time, your confidence should be high. So anything you do, you should be confident about it. So basically, if something has been your weak strength, let's say para jumpers, okay, in verbal, you have never been good in para jumpers. So whatever you could not be good in the last 4 months or 5 months, and you have tried a lot, the assumption here is you have actually put effort and you have tried, right? You could not be good at it. Your accuracy still is poor in para jumpers. Fine. The last 3-4 days, there is no point pondering about para jumpers. There are a lot many things you can actually talk about, you can actually practice rather than spending sleepless nights on para jumpers, right? So don't do it. Similar could be a case for a quants or a LRDI topic, right? So instead, these last few days, focus on things which you actually love to do. Make sure that you take good care of your health, as sir was telling you about things which you probably would want to have, right? Eat and take good care of health. Remember, we are staying in a pandemic world. So take good care of your health, have proper sleep, and on Saturday, right, a day before your exam, do not put a lot of hours into study. I would say relax, watch a movie, watch a song, hear a song, go out and speak to your friends, do things which you like, which actually cools your mind, right? So that on Sunday morning, when you wake up fresh, you are ready for something new, and your mind is not exhausted. Remember, your mind cannot be exhausted till those 2 hours of CAT are done and dusted. So Saturday, do things which you actually like. The next 3 days, definitely study. No one is saying don't study, but not with sleepless nights. And I would also suggest, I keep suggesting for my quants sessions, right? Even if you're studying quants, probably you would want to revise a few geometry theorems. Do that. Revise those geometry theorems on a Saturday. It would be good if you have them on a sheet of paper, so that you don't have to shuffle between pages and look for, okay, what is a circumcenter? If the words like circumcenter, orthocenter, incenter, right? These are words probably you might just forget, or probably a cube, the concept of cubes in LRDI, right? So these are things you would do a passive learning on a Saturday. Just have a glance, so that if anything comes, you make sure that you don't forget. So don't stress yourself in this last few days. Yes? Yes, sir, you might want to add? Yeah, sure. You are absolutely right, sir. I was in fact thinking, okay, let us suggest some movie names and songs that they can listen to lower down the anxiety level that they have developed. Guys, staying positive and confidence are very close things. मतलब आप बहुत ज़्यादा गैप नहीं है कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखने में और पॉजिटिव रहने में, राइट? सो गाइज, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली पॉजिटिव मूवी, मोटिवेटिंग मूवीज जो इंडियन मूवीज हैं गाइज, दे आर ऑल वेरी गुड फॉर दिस. तो आप अपने पसंद की मूवी देख सकते हो. मेरी पर्सनल चॉइस, अगर कोई मेरे को बोलेगा तुझे कैट देने जाना है सीरियसली,
कौन सी मूवी देख के जाएगा? सो गाइज माय फर्स्ट चॉइस विल बी दंगल. दंगल वाज अ मूवी विच आई कैन सी एनी नंबर ऑफ टाइम. इट वाज सो इंस्पायरिंग. एक एक सीन, एक एक चीज जबरदस्त. तो गाइज फॉर मी इट इज दैट. अदरवाइज देयर आर नंबर ऑफ गुड मूवीज लाइक चक दे इंडिया से शुरुआत हुई थी गाइस. फिर उसके बाद मैरी कॉम, अगेन अ मोटिवेटिंग मूवी. और वो भाग मिल्खा भाग, अगेन वेरी गुड मूवी. सो गाइस देयर आर लॉट ऑफ मोटिवेशन मूवीज. पूरी लाइन है उसकी, जितना मर्जी आप देख सकते हैं. बट लुक एट मोटिवेशन मूवीज. मेरे को तो सुल्तान से भी मोटिवेशन मिलता है गाइस. राइट. तो सुल्तान इज ऑल्सो गुड इफ इट मोटिवेट्स यू. सो गाइस मूवीज देखिए, इंडियन मूवी देखिए. ज्यादा मोटिवेशन चाहिए तो आप साउथ की मूवीज देख सकते हैं. ठीक ठाक मोटिवेशन से काम चलेगा तो हमारी देख सकते हैं. राइट गाइस. इंडियन बॉलीवुड मूवीज देख सकते हैं आप. राइट गाइस. सो चॉइस इज कंप्लीटली योर्स. व्हाट मोटिवेट्स यू, यू नो इट बेटर. एंड सिमिलरली गाइस, लिसन टू सॉन्ग्स. अब सॉन्ग्स में बहुत सारे मोटिवेटिंग सॉन्ग्स हैं, बहुत सारे मोटिवेटिंग सॉन्ग्स हैं. तो यू नो बेटर. आप गूगल पे डालोगे लिस्ट तो बहुत बढ़िया लिस्ट आ जाएगी. राइट गाइस. स्टार्टिंग फ्रॉम चांदनी चौक टू चाइना, वो मूवी आई थी, उसमें सॉन्ग्स बढ़िया थे उसके. नो डाउट बड़े मोटिवेटिंग सॉन्ग्स थे. मैंने तो बड़े लेवल के सेमिनार्स कंडक्ट करे गाइस. आई हैव डन लॉट ऑफ सेमिनार्स. और वहां पे सेमिनार्स में मैं वही सॉन्ग चलाता था. चांदनी चौक टू चाइना वाला, आज फट्टे चक लैंड दे. राइट गाइस. सो लिसन टू सॉन्ग्स. मतलब आपको एक बैलेंस दिन कैसे जीना है अब 100 घंटे के लिए, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ. एक मूवी देख लो, 3-4 सॉन्ग्स सुन लो, फ्रेंड से बात कर लो, खुली हवा में चक्कर काट लो, बैठ जाओ थोड़ी देर, है ना. और कुछ गाइस एक और बढ़िया चीज मैं आपको बताता हूँ, ये आपको बहुत हेल्प करेगी. एक जगह पर बिना मोबाइल के, बिना किसी इंसान के बस बैठ जाओ और बैठे रहो 15 मिनट तक, आधे घंटे तक. डूइंग नथिंग, जस्ट सिट. तो वो आपको ब्रेन को बहुत रिलैक्स करेगी. आप थोड़ी देर में परेशान भी हो जाओगे, भाई क्या है, क्या क्यों बैठा हुआ है. राइट. बट गाइस इट विल वर्क वेरी पॉजिटिवली फॉर योर ब्रेन. इट विल हेल्प यू टू काम द ब्रेन. ठीक है ना. उस जो बचपन में आप एक्टिविटी करते थे, काम करने के लिए वो सारी एक्टिविटी अच्छी है ना. मैं तो वो चीटियां होती है ना, चीटियां, मैं उनका पीछा करता था, कहाँ जा रही है. कहाँ घर बनाया हुआ है उसने. सो आई यूज्ड टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो. सो गाइस 2-3 घंटे पढ़ाई करो, है ना, और मूवीज देखो, फ्रेंड से बात करो, एक बैलेंस दिन बिताओ, है ना. और पढ़ाई नहीं करनी है ज्यादा, जो करनी थी हो गई. सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार्ट बिलीविंग दैट यू आर प्रिपेयर्ड एंड यू विल डू योर बेस्ट. दैट इज इंपॉर्टेंट. आप परफॉर्म करो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना बेस्ट करो. क्योंकि अगर आप अपना बेस्ट करोगे तो जैसा भी आप परफॉर्म करने वाले थे उससे बेटर परफॉर्म करोगे. राइट गाइस. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे कूल, काम, पॉजिटिव इन दिस टाइम. और ये सब करने के लिए योर रूटीन मैटर्स अ लॉट. और गाइस हम लोगों ने लास्ट मीटिंग में भी ये बात किया था, प्लीज एडजस्ट योर बायोलॉजिकल साइकिल. जितने बजे आप कैट के एग्जाम वाले दिन उठने वाले हो, उतने बजे ही सो के उठना स्टार्ट करो, जल्दी सोना स्टार्ट करो, उतने बजे ही नाश्ता करना स्टार्ट करो, है ना. बॉडी को आदत डालने में 3-4 दिन तो लगते हैं गाइस. सो स्टार्ट गेटिंग इनटू हैबिट ऑफ एडजस्टिंग योर बायोलॉजिकल साइकिल, है ना. और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, टू स्टे पॉजिटिव, डोंट टॉक टू एनी नेगेटिव पर्सन. ये ध्यान रखना, बहुत सारे लोग होते हैं ना, अबे तेरे बस की कुछ नहीं है. राइट. ऐसे किसी से पंगा मत लेना, ना बात करना. राइट. वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा, पॉजिटिव रहने के लिए अच्छा खाना खाने से भी पॉजिटिविटी आती है. अच्छा खाना मतलब बाहर का खाना नहीं, घर का अच्छा खाना. राइट. घर का अच्छे खाने में बहुत पॉजिटिविटी होती है गाइस. यू नेवर नो, योर फूड इज ऑल्सो गिविंग यू पॉजिटिविटी. सो गुड, अच्छा खाना खा सकते हैं आप. राइट गाइस. दिस इज ऑल्सो वन वे यू कैन स्टे पॉजिटिव. एंड न्यूज नहीं सुनना, मौक नहीं देना. न्यूज में क्या होगा पता है ना, कितने केसेस आ गए. तो न्यूज नहीं सुनना, मौक नहीं देना, ये डोंट्स हैं.
दैट्स इट गाइस, ये 4-5 चीजें करो, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी आएगी और आप कैट तक खुश खुश पेपर देकर जाओगे। हाँ, इतना लिथार्जिक भी नहीं होना है मूवी देख के। मैंने आपको सर ने कहा मूवी देखनी है, एक मूवी दूसरी मूवी, मैंने आज 3 निपटा दी नहीं, 1 मूवी पर डे मैक्सिमम, बिकॉज रिलैक्स करना है, लिथार्जिक नहीं बनना है ना। तो ना तो इतना रिलैक्स करना है और ना ही इतना पढ़ना है, दोनों को बैलेंस करना है। 2-3 घंटे पढ़ाई, 2-3 घंटे मूवीज, और बाकी जो आपका मन करे पूरे दिन। यू कैन डू नॉर्मल रूटीन बट डोंट स्ट्रेस एंड बी पॉजिटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस। खाने का बहुत बड़ा रोल होता है गाइस, सो आई विल अगेन से, घर का फूड खाओ, घर में कुछ भी बढ़िया बनवा के खाओ, कुछ भी। तुम्हारे को छोले भटूरे खाने हैं, घर में खा लो, कोई दिक्कत नहीं है बट अगर आपको असली में छोले भटूरे खाने बाजार वाले, तो आप 30 नवंबर को खा सकते हैं गाइस, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट 29 नवंबर तक नहीं खाना बाहर का खाना, बिकॉज बाहर के खाने में टेस्ट होता है, पॉजिटिविटी नहीं होती है गाइस। सो ये सेशन आज का, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिविटी ओनली, सो हाउ यू शुड लिव फॉर द नेक्स्ट 100 hours to stay positive, how you should stay on last exam day, that is what we have discussed. Sir, would you like to add any point to my points? Yes, sir, very correctly said, sir. Yeah, so I think one thing that students need to understand at this juncture, right? You need to understand that why this sense of uneasiness, or why this a bit of demotivating feeling that you are getting, right? Or probably the feeling that you are not well prepared. So first of all, you must realize, and I must tell you, you must, okay, that you are not the only person. I think almost 95% of the candidates, right, who are actually writing the CAT are feeling that uneasy calm, right? Some uneasiness, some sort of uneasiness they are feeling within themselves. So I think that is very normal, right? It is not happening just with you. That's point number 1. Point number 2, a lot of you are graduates, or at this point of time, you have written your 10, 12 graduation, but you know what the good part was till your grads? You had a fixed syllabus. You had a fixed syllabus. There was a proper book. You had a previous year's questions, and you do that. And with confidence, you can say, you know what? I'm done with the syllabus. I'm done with every chapter. CAT, unlike your previous exams that you have given till this point in your life, right? It's not like that. It has no fixed syllabus and there is no fixed book. Every time you open a WhatsApp or a Telegram channel, or every time you open your book, you will get something new. So no human being on earth, right, can say, I have finished studying everything. Can you? You are also another human being. So even there for you, there will not be a dearth of questions, right? Something new will come up. Even if I were to extend this exam by another 1 year, trust me, even if it gets extended by 1 year, at the end of the 365th day, right, there'll be something new that can come up. So the syllabus is never going to change, and you can never finish reading. So the sooner you realize that, the better it is. Remember, at the end of the day, it is a test of your concepts. It is a test of your understanding and your smartness. There is nothing like you need to mug up and by heart that will be tested, unlike all the previous exams that you might have written at this point of time. Also, sir talked about the biological cycle, right? I just want to add a couple of points out there. It's very important that you replicate the exam day scenario. So when I say replicate the exam day scenario, some of you probably have never sat for 2 continuous hours without wearing a mask, right? Remember, it's not 2 hours. You'll be entering the exam hall probably 30 minutes before your exam, and you need to be wearing a mask. The exam starts, the mask will be on. You are not allowed to remove the mask. Now, come Sunday night, you should not be a person who will say that I could not do well because the mask was very tight, I was feeling suffocated, or rather the mask was loose, or I am not used to it. So whenever you are adjusting your conditions, right, the exam day scenario, please make sure that at least tomorrow or day after, at least a day or 2, try sitting for 2 hours and studying wearing a mask. You know whether the mask fits you properly, okay? You know whether you will be able to do that. At least the body gets adjusted, right? You will not feel suffocated on the Sunday. If you have to change your mask, you have ample time now to change the mask, okay? One more thing, the CAT might not allow you to wear shoes and go inside, okay? But it allows socks to be worn. Now, what I would suggest is definitely wear socks.
In some parts of the country at this point of time, it is really cold. Okay. Let's say you don't wear socks and you are not allowed to wear shoes. You sit there with the bare foot on the floor. It might actually be very cold. Okay. So remember, very small points. You don't realize them at this point of time, the importance, because these are very minute points which candidates tend to ignore. But remember, you don't want any external disturbances on the day of the exam. If the CAT has asked you to take water in a transparent bottle, make sure that you carry water in a transparent bottle, because the pressure might be such that you might just want to have a sip of water every 15 or 20 minutes, right? So it is definitely better to have your own water bottle, but make sure that you carry it in a transparent, it should be a transparent bottle. Very small points you will tend to forget, but make sure that you do not, remember, it is only your smartness that should judge the CAT. How well did it go? Not any external considerations. So very, very, very important points to keep in mind. Yeah, over to you, sir. Yeah, sir. So I think we have given enough tips to students. And students, I think अब देखो हमने आपको इनपुट दे दिया है. फाइनली उस इनपुट को जोड़कर आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइस, ये आपका एग्जाम है, तो यू सिट एंड टॉक टू योरसेल्फ. तुम्हें क्या करना है, सुनो सबकी और करो अपने मन की. ये बड़ी अच्छी कहावत है गाइस. So based on listening to everyone, make your own plan what you are going to do for the next 100 hours on the CAT day. And we have given you our best advice based on our experiences. So I hope guys, all these advices are really going to help you all. And guys, one more thing I would like to share. Every Sunday Unacademy is conducting a national scholarship test. This is 5 to 6 p.m. So after your CAT exam, also you can try this. नुकसान क्या है गाइस, 5,000 रुपए का अमेजन वाउचर मिलेगा अगर आप अच्छे नंबर लाए तो हर संडे ट्राई करो. पता नहीं किस एग्जाम में लक हो गाइस. सो यू कैन विन प्राइजेस. और जो 21 के एस्पिरेंट्स हैं, जो 21 की तैयारी कर रहे हैं गाइस, उनको गाइड करो. अगर फीस में डिस्काउंट चाहिए तो स्कॉलरशिप ले लो. दैट इज अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू गाइस. सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड गाइस. थैंक यू वेरी मच for listening to us, and all the best for your CAT exam. Stay positive. If you have any problem, you can message me personally on an Academy app. You can message me personally. There I will definitely reply to you, whatever you will ask. Right? Thank you from my side, guys. Thank you and all the best for your career and your CAT exam. Thank you, everyone. So all the very best, and I'm sure that every one of you will do well, right? Just stay positive and remember, hard work always pays off. Yes, definitely hard work will pay off. All the very best.